नमस्कार, मेरा नाम आयुष चंद्रा है. I'm a psychologist and I usually train people with high net worth to get over their fears and get into a growth mindset. Now this is my work, so according to my work I meet a lot of clients. Financially they are sound, but that doesn't mean that they do not struggle with mental health issues and stress and anxiety. So recently I met the CEO of a good and big company and he said that Ayush, ज़िंदगी सब कुछ ठीक चल रही थी बट रिसेंटली आई वेंट टू माई स्कूल्स एलुमनाई मीट एंड आई फाउंड आउट द प्रॉब्लम विद मी इज़ मुझे बहुत डर लग रहा है ये सोच के शायद मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ बिकॉज दे ऑल आर वेरी हैप्पी, दे हैव डिफरेंट थिंग्स टू एक्सपीरियंस, दे हैड अ लॉट ऑफ स्टोरीज टू शेयर, बट मेरे पास शायद बिजनेस और इसके अलावा कुछ शायद है नहीं. एंड दे आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ. कोई म्यूजिक सीख रहा है, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपना बहुत ज़्यादा ही टोल्ड मी दैट हिज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स वाज गोइंग टू गो कार्टिंग रेसिंग एंड ऑल ऑफ दैट. तो ये सब चीज़ें चल रही है और मुझे लग रहा है मैं शायद कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि चाहे आप कितने भी बड़े लीडर हो, माइंड आपका भी वैसा ही है जैसे किसी ह्यूमन का होगा और आपको भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ेंगी. सो इफ़ यू आर अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, इफ़ यू आर न्यू इनटू द बिजनेस वर्ल्ड, यू मे फील अ लॉट ऑफ competition which is like a indirect competition which you are feeling internally, not that somebody is challenging you from outside. So let me help you with certain practical tips which I keep giving people who are in high performing jobs and roles. I will share that with you. So before going forward, if you like this kind of content, please subscribe to the channel and hear me out. Tip number 1 is setting clear goals and visions for yourself. Now when you're feeling FOMO, what you do is you start chasing things कि मेरे को भी ये करना है, मुझे भी ये करना है, I want to do this, I want to do that. The problem with that is just a very quick decision coming from the emotional mind. Now first I would recommend you to take a pen and paper and write down 3 प्रायरिटी एरियाज ऑफ योर लाइफ कि मेरी जिंदगी में इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है, व्हाट ब्रिंग जॉय टू मी. हो सकता है इट्स योर बिजनेस, इट्स योर हेल्थ, इट्स योर फैमिली. सो एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट प्रायोरिटी इन लाइफ. सो पहले अपनी प्रायोरिटीज, अपनी वैल्यूज, व्हाट गिव्स यू जॉय, उसको सेपरेट कर लीजिए सो दैट यू गेट अ क्लियर परस्पेक्टिव वेयर यू आर गोइंग, व्हाट्स योर रोड मैप. लेट मी टेल यू द सेकेंड टिप. मास्टर द आर्ट ऑफ सेइंग नो. बिजनेस तो आप बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन सेइंग नो टू समथिंग बिकॉज यू मे फियर कि लोग क्या सोचेंगे, व्हाट द अदर पर्सन विल थिंक ऑफ मी. सो बेसिकली व्हेन समबडी इज ऑफरिंग यू दैट ट्रिप, वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, लेट्स गो फॉर दिस एंड दैट, you may feel pressurized to say yes, but let me tell you that people who has high value in themselves, they do not fear saying no. आप खुल के ना बोलिए कि मुझे नहीं जाना, that's not in my priority list right now, that's not something which I am working on right now, my priorities are different, thank you for inviting, let me go back to my world, I'll join you someday when I feel like. So ये कोई बुरा मानने वाला statement नहीं. You don't feel that somebody else will feel bad or you are rude or something. This is what integrity feels like. This is what a high value person behaves like. ये चीज़ आपको भी सीखनी ज़रूरी है. Third tip is quite funny sounding, but it's called JOMO, the joy of missing out. I understand the FOMO is fear of missing out, and when you say no to something, you may feel a little, taken aback, या आपको बुरा लग सकता है या थोड़ा sad feel हो सकता है, and that's quite natural for human brains. So what I would suggest you instead is कि write down, whenever you have missed out on something, write down quickly in your mobile phone or your journal or your diary that what you have gained by saying no. By missing out, you're always gaining something. So maybe आपने एक ट्रिप के लिए मना कर दिया, अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए मना कर दिया या कुछ ऐसा, लेकिन आपने शायद एक बिजनेस डील वहाँ पे क्रैक कर ली, शायद आपने अपनी कंपनी का प्रॉफिट गेन कर लिया, या कुछ तो, या आपने अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताया, आपने वो बुक पढ़ लिया, आप अपने वर्कआउट पे चले गए, आप कंसिस्टेंट रहे अपने शेड्यूल के साथ. देयर इज समथिंग always which you have gained. So focus on joy of missing out rather than FOMO. Shift your perspective. Now the next step is the 10-10-10 rule. Maybe you are not aware about it, but let me also share it with everyone because मुझे लगता है बहुत सारे budding businessmen, business people are also watching my channel. So let me share that with you. 10-10-10 rule is very simple. So before you make any decision, you have to take a step back, take a breather. Do not ever take a decision based on impulsivity, based on emotion, because you have to regret later on at many times. So when you are emotionally excited, your logical, the rational brain, the prefrontal cortex doesn't work as efficiently. So take a break. Say, I'll think about it and then get back to that. Nobody is just running away from you. Just wait. If they really want you, they will be there. Take a breather. Take a pause, take rest, sit with yourself, take some deep breaths, ground yourself back.
इससे क्या होगा, इससे आपका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो जाएगा फिर से. नाउ once you are taking a decision, before that ask yourself 10 10 10. Will this decision matter in 10 days? Will it matter in 10 months? And will it matter in 10 years? Ask yourself that. If the answers are clear to you, then only make a decision. And lastly, I want to share a very practical tip with you. Create a fuck up budget or regret budget as I call it. क्या होता है ये? कभी कभी आप फोमो में प्रेशराइज हो जाते हो, एंड दैट्स वेरी नेचुरल फॉर अ ह्यूमन. वी आर नॉट वायर्ड टू ऑलवेज बी रैशनल एंड प्रैक्टिकल. वी हैव एन इमोशनल साइड एंड समटाइम्स you can be driven away. So now this regret budget, or what I call it like a fuck up budget, this could be like 10-20% of your wealth or something which you just keep separately, maybe mentally separate that budget for the times when you make wrong decisions. And that way you will be secure that, okay, it is not from my main source, it has gone from my regret budget. So do that, and that will save you at the times when you actually lose control on your emotions. I hope these tips will help you. And if you want more practical tips, more content related to how to become high net worth, how to keep your mind sane, how to make better decisions, follow this channel. It will definitely help you. I'm a psychologist and a fear expert. I'll see you in the next video. Till then, keep beating your fears like a pro.